it's not something which is impossible, I would say. And don't worry about your mains, optional interview now, starting from January. ये हमारा एकेडमी में जब स्टूडेंट्स आते हैं उनके भी यही बोलता हूँ कि अगर आप 50 में हो तो आप मायूस मत हो. डोंट बी डिसअपॉइंटेड कि मैं 100 कैसे लेके आऊँगा या 90 कैसे लेके आऊँगा. आई थिंक जो पॉलिटी के लिए नोट्स किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा किताबी नोट्स है. कट ऑफ्स हैव बीन रिड्यूसिंग कंसिस्टेंटली एवरी ईयर. जो 100-110 के आसपास था, आज आके 85 के आसपास हो गया है कट ऑफ. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग, इट विल स्टे अराउंड 85 to 90 इन मोस्ट प्रोबेबली. Hi everyone, myself Israel Jebasingh, the director of Officers IAS Academy. Today I thought I'll interview Mr. Rangarajan, who was also in IAS. He was from Assam cadre, I was in West Bengal cadre. Now I thought I'll interview him because I didn't clear in my first attempt, whereas he cleared in his very first attempt. He got all India 46th rank in his very first attempt. I thought something should be there which I should bring out so that those who want to clear in their first attempt, they can make use of it. So thank you so much, Mr. Rangarajan. Thank you so much. Yeah, pleasure. And in fact, Rangarajan teaches polity, and he has also written a book on polity. That and all I'll discuss now. First of all, how was it possible to clear in the very first attempt? No, so it's not something which is impossible, I would say. एंड ये भी हो सकता है कि शायद मैं लकी था थोड़ा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए. बट एज यू सेड, मैंने शायद कुछ कामों ठीक किया था जिसकी वजह से मैंने क्लियर कर पाया ये फर्स्ट अटेम्प्ट में. इनफैक्ट आई वाज अ वर्किंग प्रोफेशनल. मैं काम करते करते इस एग्ज़ाम को लिया, तो मेरे पास समय कम था. सो वेन एवर यू आर शॉर्ट ऑफ समथिंग, यू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट, राइट. तो यू हैव 2 hours in the morning probably. I used to make use of the time that I was traveling. जब मैं ट्रेन में जाता था, बस में जाता था मेरा काम के लिए, तभी मैं बुक्स लेके जाता था. अब तभी इतना ऑनलाइन मटेरियल नहीं थे, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था. सो यू हैव टू रीड फ्रॉम रिटर्न टेक्स्ट बुक्स. बट मुश्किलें थी, बट इट इज़ अबाउट दैट फोकस कि ठीक है मुझे करनी है ये पहली बार. एंड सो दैट फोकस इज़ वन थिंग. आई थिंक the most important thing for clearing this exam. And पहले बार क्लियर करना, पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत अच्छा लगता है. बट वी नो दैट द नेचर ऑफ दिस एग्जाम इज सच दैट लोग 2-3 अटेम्प्ट ले लेते हैं, बट whoever clears this does not lose focus. तो एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम हम देख रहे हैं हमारे एकेडमी में. हम सुबह 4:30 बजे रीडिंग रूम खोल देते हैं, रात के 10 बजे तक बैठ के पढ़ सकते हैं लोग. हम वीकली टेस्ट रखते हैं. So there is lot of focus that comes because of structured coaching and training. But still ultimately exam तो उन्हीं को लिखना है. They have to go and write the exam. तो मेरा most important advice ये होगा कि आप ये मत सोचिए कि आप अगर 10 घंटे पढ़ेंगे तभी लिख पाएंगे, तभी क्लियर कर पाएंगे. 12 घंटा पढ़ना चाहिए, 14 घंटा पढ़ना चाहिए. जितना भी आप पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ो. And stay focused in what you're doing. And ensure that you are covering the entire syllabus before you go to the exam hall. Now, how many hours one has to study? Is there any prescribed rule for that? नहीं, I always say this कि आप किताब के साथ 10 घंटे बैठे रह सकते हो doing nothing, or you may just be reading for 2 hours but you will get so much of data out of it. और ये चीज़ हर कोई को होता है. मतलब nobody can be consistent कि जितने घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं वो पूरा 100% एफिशिएंट होगा, वैसा कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस. बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वन हैज टू कीप इन माइंड इज यू कैन जस्ट स्टडी फॉर 10 minutes a day and clear this exam. बट ये 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ऐसा सोचने के बजाय आप पूरा स्ट्रक्चर रख लो 1 साल के लिए. कैसे आप अप्रोच करने वाले हो. पहले मेंस की तैयारी अलॉन्ग विद प्रीलिम्स, देन आफ्टर द प्रीलिम्स इज ओवर फुल्ली द मेंस. तो आई फील दैट if you study for 6 to 8 hours in a very very focused manner, right? 1 या 2 घंटे करंट अफेयर्स अपडेट करने के लिए, क्योंकि आजकल
जो प्रिलिम्स है, जो मेंस में भी एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स ओवरव्यू इन दैट. सो आपको करंट अफेयर्स में अपडेट रहना चाहिए. 1 or 2 hours फॉर करंट अफेयर्स, 2 to 3 hours for the subject that you want to study during the day, and maybe 1 hour for writing practice or for solving questions. And if you are attending a class, then obviously you will gain knowledge from that class for 2.5 or 3 hours which you are attending. तो ये structure आप consistently एक साल करोगे, then you can definitely clear this exam. Now, this May is the preliminary exam. Another 4 months, solid 4 months are there. See, since you have cleared in your first attempt, something should be there inside you. What you will do if you are writing this year exam, fresher, let us assume, next 4 months, how you will approach so that you can clear, so that others can follow and clear. Absolutely. तो आपको पहली चीज ये ध्यान में रखना चाहिए. The first thing that you should keep in mind is, don't worry about your mains, optional, interview now, starting from January. I think without clearing the prelims, you don't get to the mains. And if on May 26th, evening 5 o'clock, when you are doing the cutoff, right, बहुत सारे लोग अपने अपने आंसर की लेके आते हैं, but average आंसर की score, if you are above 90 or above 100, then you will create time for the mains. So the key is to ensure that you revise the entire syllabus at least twice. उसके लिए आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए. पॉलिटी के लिए इतना समय, इकोनॉमी के लिए इतना समय. देयर आर, सी, आई फील देयर आर 6 important subjects, right? Polity, economy, geography, modern Indian history, science and technology, and the international relations, because IR has also got. So these are the 6 subjects. स्टैटिक होती है इसमें करंट अफेयर्स भी होती है. सो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई एक ट्रस्टेड सोर्स लेके रखो. फॉर एग्जांपल, the Pulse magazine that our academy brings, it covers everything, almost everything, right from Kurukshetra, Yojana, All India Radio, PIB news, everything in one-stop solution, right? So make use of one trusted current affairs source. Have one standard textbook for each of the subjects, and ensure that you are revising it adequately 2 to 3 times. One source. Any additional points आप notes बना सकते हो साथ में, but only one source you revise, and definitely take a test series. मतलब कहीं पे भी आप ले लो टेस्ट सीरीज, हमारा एकेडमी में है, बहुत सारी जगह पे है, बट आई थिंक यू शुड हैव दैट प्रैक्टिस ऑफ हैविंग रिटर्न 25 to 30 टेस्ट at least, so that you know where you're going wrong and where you can correct yourself. So broadly, ensure that 6 subjects you master along with current affairs, then I think you can be through the prelims. Now, prelims test series is crucial. Now, another 4.5 months. Once one completes the test, after completing a test, how one should analyze? So ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. पीपल जनरली लुक एट ओनली देयर स्कोर्स आफ्टर द टेस्ट. अगर मान लो किसी को 120 आता है एक टेस्ट में, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर. देन पीपल आर हैप्पी. ओके, आई हैव स्कोर्ड 120, आई डोंट हैव मंथ, बट यू हैव स्कोर्ड ओनली 120 out of 200. टेक्निकली you have still got 30 or 40 questions wrong in that test also, because of which your score is 120. And there are people who are at, let's say, 50 or 60, right? मैं mentoring के लिए हमारा academy में जब students आते हैं, उनके भी यही बोलता हूँ कि अगर आप 50 में हो तो आप मायूस मत हो. Don't be disappointed कि मैं 100 कैसे लेके आऊँगा या 90 कैसे लेके आऊँगा. I think the key to do it is, if you are at 50 in December, you should go to 60 in January. You should go to 70 in February. You should go to 80 in March. You should go to 90 in April, and then maintain that for May. Similarly, somebody who is consistently scoring 100, they should ensure they don't slip to 70 or 80 in these 4 months. That is point number 1. दूसरी चीज, the complete preparation from a test series does not end with just writing the test for 2 hours and coming out and checking the score. आपको आंसर की या टेस्ट डिस्कशन जो होता है उसको फॉलो करना चाहिए, बिकॉज द आंसर की हैज सो मच ऑफ एक्सप्लेनेशन. कोई भी टेस्ट सीरीज ये नहीं बोल सकता है कि जो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो आता है यूपीएससी में, बिकॉज यूपीएससी हैज इट्स ओन वे ऑफ सरप्राइजिंग पीपल. बट द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड मे नॉट कम, बट उसका जो एक्सप्लेनेशन है उससे एक स्टेटमेंट आ सकती है. There could be a question from one of the explanations or the incorrect statement which may be asked as correct statement in UPSC. So I think you need to follow the answer key in the best possible manner. और मैं एक और
चीज़ बोलता हूँ, जिसको जो हमारे एकेडमी से भी जो टॉपर्स बन के गए हैं उन्होंने मुझे आके बोला है कि सर आपका ये जो सजेशन था दैट इज़ व्हाट वर्क फॉर अस द बेस्ट। कि मान लो आपने दिसंबर में एक टेस्ट किया हो, उसका आंसर की भी आपने रिवाइज कर लिया है, sometime in February, after 3 months, you should pick that question paper. You should spend just 20 minutes because you already remember vaguely the question. You should quickly mark all the answers in a separate sheet and you see whether you score 200 out of 200 because you have already seen the answer key. So your answer should be there in your mind. So you should not miss 200 out of 200. हो सकता है कि कोई गलत हो जाए, बट जो गलत होता है तभी दैट यू अगेन रिवाइज बिकॉज यू हैव स्टिल नॉट अंडरस्टूड इट and that will improve your chances of scoring better in the exam. So I think do the test, don't just stop with looking at the score, don't feel bad if you're scoring only 50 or 60, have a 10 mark target every month to increase it to 90 to 100 by May, and people are scoring more than 100 consistently, ensure that you maintain that, revise the answer key fully and redo the test after a gap to see whether you have retained everything that you have learned. How much important it is to see the previous year question papers, because any of questions are not going to be repeated. Right. So though the questions are not repeated, वैसे कि मतलब पॉलिटी या इकोनॉमी में क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, द कॉन्सेप्ट्स आर द सेम, बट द पैटर्न, द एरियाज वेयर पीपल पिक द क्वेश्चंस, अगर आप देखोगे पॉलिटी में, मैंने जैसे आपने बोला पॉलिटी सिंप्लीफाइड जो मेरा किताब मैंने कोर्सवेयर जो लिखा है मैंने, उसमें अगर आप देखोगे तो द एंटायर सब्जेक्ट इज कंसाइज इन अ मैनर 450 पेजेस दैट आई हैव डन, बट उसमें भी मैंने ध्यान पार्लियामेंट, legislature and fundamental rights, those are the biggest chapters in any textbook, but even in my book, which is in a concise manner. If you analyze it, fundamental rights and parliament, the legislature, are the two most important areas from which questions keep coming, and there is a pattern to the repetition. So the previous year questions for the last 25 years, though the pattern, the way the questions are asked has changed, अगर आप पिछले 25 साल का क्वेश्चंस जो हम भी करते हैं हमारा टेस्ट सीरीज में, वी इंश्योर दैट वी इंक्लूड इट एज पार्ट ऑफ द टेस्ट दैट वी कंडक्ट, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा टू एटलीस्ट क्रैक द क्वेश्चंस फ्रॉम static areas, from predictable areas like polity, economy, and to some extent even history. Now, this Polity Simplified, since you are talking about it, I've also seen that book. For revision, I think it will be very useful. And in fact, knowing the concepts, but more exam oriented. What exactly you have done in that book? No, so उसमें मैंने ये किया है कि मतलब लोग 800-900 पेजेस के किताब बहुत बार पढ़ते हैं, बट उनको रिटेन करने में दिक्कत होती है, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटेन. तो मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि मतलब जो पॉलिटी के लिए नोट्स किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा किताब ही नोट्स है. इट्स अ बुक बट रिटन इन अ नोट्स फॉर्मेट. एंड इसमें जो प्रीलिम्स का जो भी इम्पॉर्टेंट एरियाज है उसको हमने ग्रे एरिया में हाईलाइट किया है, शेड किया है. हमने निमोनिक्स दिया है, हर एक चैप्टर के एंड में वी हैव निमोनिक्स विच कैन हेल्प यू टू ईजिली रिकलेक्ट. Right? Discretionary power of the governor is RAC. Everybody travels by train, so they remember the term RAC, reservation against cancellation. But the same term is the discretionary power of the governor. Reservation of bills, appointment of a chief minister when nobody has a majority, constitutional machinery breakdown, writing a report to the president. And because governor is so much in news now in the last 6 months, this could be asked as a question. And all you need to remember is RAC to get that answer right. So these are certain things which I have done, and also conversion of the content for mains, how to structure the answer, and for that model answers for the last 10 years have been provided as part of the courseware. Some people who have not cleared prelims, some of maybe second attempt, third attempt, but not cleared prelims, what is your advice to them? No, it's a टफ क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि मतलब अगर कोई प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं और फिर मेंस में उनका छूट जाता है, फिर इंटरव्यू में छूट जाता है, दे एटलीस्ट नो द आर्ट ऑफ क्रैकिंग द प्रीलिम्स. बट एट द सेम टाइम देयर आर सम पीपल whom we have seen जो तीसरी या चौथी अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर करते हैं और सीधा सर्विस लैंड कर देते हैं, बिकॉज दे आर सो गुड एट एनालिसिस, दे आर सो गुड एट प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स. सो आई थिंक आपको 2-3 चीज ध्यान में रखना चाहिए. कट ऑफ्स हैव बीन रिड्यूसिंग कंसिस्टेंटली एवरी ईयर. जो 100-110 के आसपास था, आज आके
85 के आसपास हो गया है कट ऑफ, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इट विल स्टे अराउंड 85 to 90 इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी. तो जो पहले लोग बोलते थे कि 90 क्वेश्चन अटेंड करो, 95 क्वेश्चन अटेंड करो, अटेंड एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, आई थिंक यू नीड टू रीअसेस दैट. अगर आप 90-95 क्वेश्चन अटेंड करेंगे आज के तारीख में, चांसेस आर दैट यू मे हैव अ डिसएडवांटेज. बट एट द सेम टाइम nobody who just attempts 60 questions, there'll be very few, I mean I always say this, शायद 2% लोग ऐसे होंगे जो 60 क्वेश्चंस अटेंड करके प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, and there'll be only 2% of the people who attend 95 questions and clear prelims. The majority in the bell curve will be those people who attend a sweet spot. That sweet spot used to be 85 to 90 earlier. Maybe you'll have to reassess it. That sweet spot has come down to 75 to 80 today in my assessment. So आपको जो श्योर शॉट है 30 या 40 क्वेश्चंस होते हैं तो उसको तो आपको अटेंड करना ही है. 50-50 जो क्वेश्चंस है शायद 20 के आसपास होगा जो आपको दो ऑप्शंस में दिक्कत है आपको और यू आर कंफ्यूज्ड. प्रोबेबिलिटी सेज दैट यू विल गेट हाफ ऑफ इट करेक्ट मोस्ट लाइकली. तो वो पकड़ लीजिए 20 क्वेश्चन है तो 60 क्वेश्चन हो गए. Then you will have to be judicious in picking another 15 to 20 questions where you take a chance and hope to cross that magic figure of 85 or 90. But I think जो सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट प्रीलिम्स ले रहे हैं आप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, टेस्ट सीरीज लीजिए, जो मैंने टेस्ट का रिवीजन का बात बोला है उसको कीजिए, एंड assess in every test, take every test as if it is May 26th prelims. I always say this even to our candidates. ऐसा मत सोचो कि 1.5 घंटे में ख़त्म करके आप बैठ रहे हो. You should do it for 2 hours as if it's the prelims test and ensure that you are assessing yourself कि ये मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ तो ये मैं फॉलो करूँगा May 26th को भी, ये मैं गलत कर रहा हूँ तो इसको मुझे रेक्टिफाई करना है. So I think those are the things that people should definitely. Thank you so much for sharing your knowledge. So friends, I think it should have been very useful for you, for those who are targeting this year, those who have not consistently cleared prelims but want to clear this year prelims, what to do next 4 months, how to approach every question paper, how to do analysis. So all these things we could learn from Mr. Rangarajan, who cracked the civil service exam and got all India 46th rank in his very first attempt. Thank you so much for watching.